So let us start today's lecture. मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने फॉर्मूले डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस क्या होता है, बिकॉज वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड ओवर अ फील्ड। सो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि फील्ड क्या है। फील्ड के लिए ये हम लोगों को क्या मिला कि फील्ड एक सेट ऑफ सम एलिमेंट्स है जिसपे हम जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो वो नॉन एम्पटी होना चाहिए जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हों। उसके बाद उस पे 2 ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए, ओ प्लस और सी डॉट हम लोगों ने इन जनरल माना था। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 ऑपरेशन, इफ ये 9 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, in that case that set with respect to those 2 operations is known as a field, right? उसमें प्रॉपर्टीज में क्या था हमारा, कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी सेम चीजें होनी थी, कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, associativity with respect to multiplication, distributivity over addition, left and right both. After that, existence of multiplicative identity, and the last one is existence of multiplicative inverse. अगर ये प्रॉपर्टीज किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स पे 2 ऑपरेशंस डिफाइन करने के बाद आ रही हैं, in that case that set is known as a field with respect to these 2 operations. नोटेशन क्या था हमारा? In general, how we define, let me write here, f plus dot. This is how we denote a field. Okay, इसके बाद हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। रियल नंबर का सेट हमने दिखाया था कि वो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल आप लोगों ने किया? यस मैम। यस मैम। वो फील्ड प्रूफ हो गया? यस मैम। थोड़ी दिक्कत आ रही थी लास्ट। कौन सी प्रॉपर्टी में? डिस्ट्रीब्यूटिव वाले में। ओके, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव में दिक्कत आ रही थी तो हम लोग देख लेते हैं। बाकी रिमेनिंग हो गई थी। Associativity, addition with respect to both multiplication, existence of additive inverse as well as multiplicative inverse or identity B. So Yes, let us see how it is distributive over complex number systems. With respect to addition and multiplication, usual addition and usual multiplication. So we will see only distributive because data is some people are getting trouble to that. डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें क्या लेना होगा? 3 एलिमेंट्स लेने होंगे x इस C के, तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना x y z. यस मैम। So let us take a1 plus ib1, a2 plus ib2 and a3 plus ib3. Let this belongs to the set C, be any member of C. Then let us call this as, कुछ नॉमेनक्लेचर के लिए बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करना चाहते हैं आपको? v1 v2 v3 लिख दें? या फाइन। यस मैम। ओके मैम, राइट। v2 v3. Now v1 plus v2 into v3 will be what? This will be equal to
A1 plus IB1. Yeah, I am doing. Please keep some time. Plus A2 plus IB2 into A3 plus IB3. So this will be what? Real parts will be added in real parts and imaginary parts will be added in imaginary parts. A1 plus A2 plus I B1 plus B2 into A3 plus IB3. इसके बाद मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन था बताइए। नहीं याद है सी कैसे डिफाइन था कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन। This one A1 plus IB1 into A2 plus IB2 is equal to A1 A2 minus B1 B2 plus I A1 B2 plus A2 B1. The same thing let us apply here and let us see what we are getting. We will get A1 plus A2 into A3 minus B1 plus B2 into B3 plus I into A1 plus A2 into B3 क्योंकि A1 B2 था plus B1 plus B2 into A3. Correct? This will be the multiplication. Yes, ma'am. Now let us see what it will be. Just expand this. This will be equal to A1 A3 क्योंकि A1 A2 A3 B1 B2 B3 सब रियल नंबर्स हैं. So this will be equal to क्योंकि रियल नंबर्स तो रियल नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना. रियल नंबर का सेट सुबह हम लोगों ने देखा था ना. Yes, ma'am. So this will be A1 A3 plus A2 A3. This will be what? B1 Minus B3 B1 B3 minus B2 B3 B2 B3 plus I in bracket. This will be what? A1 B3 A2 A1 B3 B3 plus A2 B3 plus this one last one B1 A3 B3 B1 A3 plus B2 A3. Now see here A1 A3 B1 B3 B2. Someone mic is disturbing. Please mute. Rohan, just mute your mic. Now what will be V1 V3 plus V2 V3? V1 V3 will be what? This I am keeping that here. Okay, no issue. Can I write A1 A3 with B1 B3? This can be written as A1 A3 minus B1 B3 plus A2 A3 minus B2 B3. And this bracket part can be written as plus I into A1 B3 plus A3 B1 or B1 A3. Yes, ma'am. Plus let us write remaining part A2 B3 plus B2 A3. Now one more step we will do, and this we can write as A1 A3 minus B1 B3
plus I into these first two terms, A1 B3 plus B1 A3, and the remaining part we can write plus A2 A3 minus B2 B3 plus I into A2 B3 plus B2 A3. Now, what is this thing? A1 A3 minus B1 B3 plus I A1 B3 plus B1 A3. हमारी मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या थी? A1 plus IB1 into A2 plus IB2 is equal to A1 A2 minus B1 B2. अगर हम लोग अपने उस डेफिनेशन को फॉलो करें तो ये क्या है? V1 और V3 है. Right. So this is nothing but A1 plus IB1 into A3 plus IB3. What about second part? This part? V2 and V2 Plus A2 plus IB2 into A3 plus IB3. This can be written as, क्योंकि इसे हम लोगों ने नाम V1 दिया था, V1 V3 plus V2 V3. So one side of distribution is followed. In vector space, do we need both sides? Yes. So now, can you prove that V1 into V2 plus V3 is equal to V1 V2 plus V1 V3 by following the same approach? yes ma'am. Yes, ma'am. So with now, can we conclude that this is Yes, a vector ma'am. space? Yes, Sorry, ma'am. field, not vector Field. space. मैम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला बता दीजिए. Okay, for multiplicative inverse, if we are taking any complex number a plus ib, then whether first we have to check if this is non-zero. Non-zero means at least one of a and b is non-zero. Then 1 upon a plus ib is defined. अगर a और b में से कोई भी एक नॉन जीरो होगा तो ये क्वांटिटी डिफाइंड होगी. यस मैम. So we can take as a multiplicative inverse of this v1 as this v1 inverse. और अगर इसे आप लोग नीचे i नहीं लेना चाहते क्योंकि यूजुअली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऊपर लिखते हैं, what we can do, we will multiply with conjugate a minus Yes, ib. ma'am. A minus iota b by a minus iota b. So this will be what? A minus ib upon A square plus minus ib b into, plus b square. yes, a square plus b square. So any one of a or b is non-zero, then a square plus b square is non-zero. अगर कोई भी Yes, इसमें से ma'am. एक non-zero होगा तो ये डिफाइंड Yes. होगा. Yes, ma'am. So what will be the v1 inverse? V1 inverse will be a upon a square plus b square minus I into b upon a square plus b square. This will be the multiplicative inverse of a plus ib. And whenever we will multiply Thank you. that, okay, just let me complete. Whenever we will multiply that, we have to check whether multiplication we are getting 1 or not. Minus ib upon a square plus b square. So this will be equal to again a plus ib into a minus ib divided by a square plus b square. A plus ib into a minus ib will be equal to a square plus b square Yes, upon ma'am. a square Yes, plus ma'am. b square, and this is equal to 1. So we can say that for any non-zero element v in C, there exists an element of type this, which is given by
v1 bar upon modulus of v1, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे डिफाइन करते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Yes, ma'am. So for any given number v1, the v1 inverse is defined by this one, which gives us v1 into v1 inverse is equal to 1, multiplicative identity of field. Anyone else have any doubt? और किसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन फील्ड प्रूफ करने में कोई दिक्कत आई थी? No, ma'am. Okay, so let us move forward. कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉरी कॉम्प्लेक्स और रियल तो हो गया, रेशनल नंबर के साथ किसी ने ट्राई किया कि यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्यूब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज आल्सो फॉर्मिंग अ फील्ड? Yes, नहीं ma'am. ट्राई? Yes, ma'am. सारी No, प्रॉपर्टीज ma'am. फॉलो हो रही थी? Yes, ma'am. ओके, जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया है प्लीज ट्राई, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज ये भूल जाएंगी 2-4 दिनों में, और फिर रिकॉल करना टफ हो जाएगा, क्योंकि हर चीज याद नहीं की जा सकती ना, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा से ज्यादा वो खुद से याद होती जाएंगी। Okay, ma'am. जेड सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ ये फील्ड नहीं फॉलो करता है ना, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। राइट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, क्योंकि अगर हम जेड कोई नंबर ले रहे हैं n, तो 1/n हमेशा एक इंटीजर नहीं होगा, तो अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो वो जेड में बिलोंग नहीं करेगा, राइट? तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एग्जिस्टेंस इसमें नहीं मिलती है जेड में, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फील्ड with respect to usual addition and usual multiplication. After that we have seen vector space. For a vector space what we need 4 things. पहला हमारे पास एक सेट V होना चाहिए, नॉन एम्पटी सेट, एक फील्ड होना चाहिए और 2 ऑपरेशंस उस पर डिफाइन होने चाहिए। एक फील्ड एक सेट V से V पे जाएगा, दूसरा F क्रॉस V से V पे जाएगा। मीन्स if V1, V2 are 2 elements of this set V, then V1 plus V2 will also go to this V, and alpha into V are A into V, where A is scalar and V is coming from this vector space, vector set. Then A into will also go to V. जब ये दोनों ऑपरेशंस हमारे इस पे डिफाइंड हो, पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारी रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो रही हैं, then we will call that V over F with respect to these two operations plus and dot forms a vector space, right? यस मैम। और जब इस F को हम लोग R रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मीन्स F यहाँ पे एक फील्ड था, फील्ड पे कई सारे स्ट्रक्चर आ सकते हैं ना, जैसे अभी हम लोगों ने पिछला देखा रेशनल नंबर फॉर्म करता है फील्ड, प्लस C फॉर्म करता है, R फॉर्म करता है, ऐसे ही आप अगर चेक करेंगे तो R प्लस मीन्स 0 to infinity will also form a field. तो जब हम इस F को पूरा होल रियल नंबर लेंगे, then we will call that रियल वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स। और जब इस F को हम C लेंगे होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, in that case we will call this vector space as a complex vector space or vector space over complex numbers. Clear? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक एग्जांपल देखा था इस पे, ये फर्स्ट वाला सेट Rn ओवर R एक फील्ड फॉर्म करता है, सॉरी वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि
इस पे दो ऑपरेशंस इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखे थे कि ऑपरेशंस इस Rn इस V से कैसे डिफाइंड है, एडिशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट रिमेनिंग ऑल 8 properties are being satisfied with respect to these two operations. So we have concluded that this Rn is forming a field over R. यहाँ तक ये लास्ट था ना हमारा सुबह का. राइट, यही था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What about the second yes, one? ma'am. Cn over C किसी ने ट्राई किया था, ये फील्ड है कि नहीं, वेक्टर स्पेस है कि नहीं? No, ma'am. I have not tried it. Me too, ma'am. Anyone else? किसी ने भी ट्राई किया था? Yes, ma'am. I have. No, ma'am. ओके, अगर किसी ने भी नहीं ट्राई किया था तो आप लोग प्लीज इसके लिए ट्राई करिएगा कि ये Cn over C वेक्टर स्पेस है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस. जहां पे अब ये x1, x2, xn जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. C भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. उसके साथ आप लोग चेक करिएगा ये फिर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रही है या नहीं. आप लोग चेक करेंगे या फिर हम करें? We will try, ma'am. Okay. Then in your free time, please take trial for this. What Ma'am, about the बता third दो. one? Let V is equal to R2 and F is equal to R, and some operation is defined on like this one. X1 y1 plus x2 y2 is equal to x1 plus x2 comma 0. And C into x1 y1 is equal to C x1 comma 0. What your guess says about this? Will this form a vector space? Let us Yes, check. ma'am. Everybody are sure that this will be a field, vector space, last one? Not sure, ma'am. Properly. Okay. If not, let us check whether this will be a vector space or not. V is equal to R2 means set of tuples x comma y such that x, y belonging to R. And F is set of real numbers. Plus is defined how? Plus from V cross V2 defined how? That x1 y1 plus x2 y2 is equal to x1 plus x2 comma 0, and dot is defined how? F cross V to V by A into x1 comma y1 is equal to A x1 comma 0. First thing we will check whether if x1 y1 x2 y2 is belonging to this set V which is defined by this one, will x1 plus x2 comma 0 belongs to this V? बताइए, ये R2 का मेंबर होगा या नहीं? x1 plus x2 comma 0. Think about it and answer. जीरो रियल नंबर है? Yes, ma'am. होगा. Yes, ma'am. x1 x2 अगर रियल नंबर है तो x1 plus x2 भी रियल नंबर होगा. So this tuple will belongs to V. And what about this one? A एक रियल नंबर है, x1 भी रियल नंबर है, y1 भी रियल नंबर है. इनका प्रोडक्ट आ रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन A x1 comma 0. क्या ये जाएगा V में?
Yes, ma'am. This also Yes, ma'am. belongs to V. So we can say that Yes, ma'am. these operations are well defined on the given set with respect to this field. Now, if the operations are well defined, we will come to check our first property, which says what? Associativity of vector addition. Let us take x1 y1, एक्सक्यूज मी x2, yes, मैम सेकेंड वाला फिर से बताया तो जो कंडीशन लिखे हैं सेकेंड कंडीशन क्या है, ये कोई एक सेट ऑफ वेक्टर v हमारे पास गिवन है, f एक फील्ड गिवन है, इस पे दो ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि जब हम x1 y1 प्लस x2 y2 को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन हमारा x1 प्लस x2 0 हो जा रहा है, मीन्स y वाला पार्ट जो है वो नहीं आ रहा है. In physical interpretation, if you will see that we are taking a projection of this sum on x plane, x line, x axis. Am I right? यस मैम यस मैम And multiplication कैसे define है? A x1 y1 is equal to A x1 comma 0. This is also a projection of our point A x1 comma A y1 on x axis. यस मैम So now we are going to check whether this is with respect to these two operations is a vector space or not. So for the first one, we have to check whether the vector addition is associative or not. For that, let us assume that three members x1, y1, x2, y2, x3, y3 belongs to V. If x1, x2, this belongs to V, what will be? Let us nomenclature it V1, V2, V3 simplicity के लिए. Then V1 plus V2 plus V3 will be what? This will be equal to x1 y1 plus x2 y2 big bracket plus x3 y3. Because whatever the result of coming from the sum of first two v1 v2, after that we are adding the v3 in that result. So what will be the sum of these two by definition? x1 plus x2 comma 0, right? x1 plus Yes, ma'am. x2 comma 0, and now we are adding this x3. This will be equal to what? x1 plus x2 plus x3 comma 0 by definition of vector addition जो कि यहाँ given है. Yes, ma'am. Now अगर x1 x2 x3 सब रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो एसोसिएटिविटी फॉलो होती है. Am I right? So by following that, can I write this one as x1 plus x2 plus x3 comma 0? Can I write this by following the associativity Yes, property of ma'am. real numbers? If I can write this, can I write this one as x1 y1 plus of x2 plus x3 comma 0? This is the same thing क्योंकि हमारा वेक्टर एडिशन इस सेट पे ऐसे डिफाइंड है ना. So this x1 plus x2 plus x3 comma 0, can I write this one as x1 y1 plus x2 plus x3 comma 0? Yes, ma'am. Again, by applying the vector addition definition, can I write the last one as x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3. This is correct? We can write this one from this. Yes.
If we can write this, what is our x1, y1, x2, y2, x3, y3? v1 plus v2 plus v3, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So with this, can I say that associativity hold? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hold, it's hold. Associativity with respect to vector addition holds. Ma'am, I didn't get it in second step, please. This one. Second step, this one. This one. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे क्या था, v1, v2, v3 को पहले हमने x1, y1, x2, y2, x3, y3 के टर्म्स में रखा, राइट? उसके बाद जब अगर ये v का मेंबर है तो इस पे एडिशन डिफाइन कैसे है? एडिशन यहाँ पे डिफाइन ऐसे किया गया है कि x1, y1 प्लस x2, y2 जब हम लोग कर रहे हैं, दिस गिव्स द रिजल्ट x1 प्लस x2, 0. y पार्ट ये 0 कर दे रहा है. Okay, So ma'am, I this understand. okay. तो वही इस एडिशन की डेफिनेशन बस हमने पहले फॉरवर्ड वे में लगाई है और फिर जब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से रिवर्स वे में लगाई है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let us check commutativity. If v1, v2 belongs to v, then v1 plus v2 is equal to x1, y1 plus x2, y2, right? Sum Yes, कैसे ma'am. डिफाइंड है? This will be equal to x1 plus x2, 0, right? अब रियल नंबर का सेट खुद में कम्यूटेटिव भी होता है. दो रियल नंबर्स अगर ऐड किए जा रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव होते हैं. सो कैन आई राइट दिस x1 plus x2, 0 as x2 plus x1, 0 by utilizing the commutativity property of real addition of real number? Yes, ma'am. If I can write this again by utilizing the definition of vector addition of this given, can I write this one as x2, y2 plus x1, y1? And this Yes, is ma'am. what? v2 plus v1. So with this we can say that commutativity with respect to vector addition also holds. Now let us come to the third one. Third property is what? Existence of identity element. Vector additional vector 0. Third is what? It also holds, ma'am. Right? क्योंकि 0, 0 हमारा मेंबर तो है ही v का. 0 रियल नंबर है. उसमें सारे टपल्स जा रहे हैं जो x, y को r दे रहे हैं. x, y where x, y belonging to r, so 0, 0 belongs to r, belongs to v. With this one, what we will obtain? v1 plus 0 is equal to what? x1, y1 plus 0, 0. This will give us what? x1 plus 0, 0. This will be what? Simply V1, ma'am. ये v1 होगा क्योंकि v1 तो हमारा x, y की टाइप का है ना. No, ma'am. This will give us 0.
So is this a vector space or not? No, ma'am, it is not a vector space. Okay. So from here, what we can conclude that since V1 plus 0 is not equal to V, this implies that कौन सी प्रॉपर्टी है ये? Identity element of vector addition. Existence of identity element of vector addition does not hold. If this does not hold, what we will conclude? Given set V over F with respect to given these two operations, it's not a vector space. Right? Yes, ma'am. Please take some time to convince yourself. अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि ये जो थर्ड दिया गया है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं. I understand, ma'am. Okay. So next example, what we can see, let V be the set of all polynomials of degree less than or equal to n with real coefficient. How to write a polynomial? पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए. ax square plus bx plus c. राइट. ax सॉरी आपने क्या बोला? ax square plus bx plus c. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. AXN xn plus xn minus 1 plus xn minus 2 and so on, ma'am. Ma'am, a naught plus a1x plus a2x to the power 2 plus dot 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 an xn to the power n. Okay. Nth degree polynomial in general can be represented by a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an x to the power n. This is a general representation of a polynomial of degree n in the indeterminate x. तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं अननोन्स के या फिर इनडिटरमिनेट के with real coefficient. So where this a0, a1, an will go? Where? Belongs to real number. Belongs to? Real number. Yes, real number. Where all of these are belongs to real numbers. So our set V is this one. Now, what is said? Let the field of scalars be R and define the vector addition and scalar multiplication as follows. Like a0 plus a1t plus a2t square plus ant to the power n plus b0 plus b1 will be summed as this phi. Means जो सेम डिग्री के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम एक साथ ऐड करते हैं. पॉलिनोमियल एडिशन में तो यही करते हैं ना. इससे तो आप लोग अवेयर होंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
And how the scalar multiplication Yes, is ma'am. defined? C into some polynomial is equal to each coefficient will be multiplied by C. So whenever we will multiply C into A0 plus A1t plus A2t square plus ANt to the power n, this will be equal to CA0 plus CA1t plus Hello. CA. Yes. Someone is saying something? CA2t square plus CANt to the power n. Now this set V with over R, whether form of field with respect to these two operations. For that, let us take V1, V2, V2, V1, V2, V3 तीन ले लेते हैं क्योंकि हमें तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना. ऑपरेशंस तो वेल डिफाइंड है. ऑपरेशंस में किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके, अगर ऑपरेशंस में डाउट नहीं है तो No आगे doubt, बढ़ते ma'am. हैं. Now let us take V1 is equal to A0 plus A1x plus A2x square up to so on an x to the power n. V2 contains coefficient B0 plus B1x plus B2x square plus up to so on Bn x to the power n, and V3 is C0 plus C1x plus C2x square plus up to Cn x to the power n. Now we will again verify one by one all 8 properties. The first one is associativity. Then V1 plus V2 plus V3 will be what? V1 plus V2 will be what? A0 plus B0. By definition, we will add coefficients with same power or same degree. A1 plus B1 into x plus A2 plus B2 into x square plus dot 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 an plus bn x to the power n, and this whole will be summed by V3. Whenever we will add V3, उसके बाद रिजल्टेंट क्या होगा बताइए हमें. अगर हम V3 को इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? पहला कोफिशिएंट क्या होगा? Ma'am, A naught plus B naught plus C naught plus A1 B1 plus A1 plus B1 plus C1 whole into X and so on. A1 plus B1 plus C1 into X plus A2 plus B2 And so on. Right. C2 x to the power 2 plus so on. The last term will be an plus bn n plus cn plus cn का whole terms x की power n. right, multiplied by x to the power n. Now again, by utilizing the associativity property of real number, what which coefficient can be written as? A0 plus B0 plus C0. We can write this one without any problem. Yes, ma'am. We can. Yes, ma'am. No doubt. A1 plus B1 plus C1 into X plus A2 plus B2 plus C2 का whole x power 2 whole x to the power 2 up to and so on.
an plus bn plus cn का whole x bar है. whole multiplied with x to the power n. Now what we can write this sum? This sum can be written as v1 plus b0 plus c0 x, sorry, b0 c0 plus b1 plus c1 x plus b2 plus c2 x square plus bn plus cn x to the power n, and this will be equal to v1 plus v2 plus v3, correct? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. with this, what we can conclude? Associativity with the with respect to vector addition holds. Now what about commutativity? Please do with me and answer me. It also B holds, will, ma'am. it also holds because this will be what? A0 plus B0 plus A1 plus B1 x to the x plus A2 plus B2. अच्छा, अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं, लेट मी जस्ट गिव for just compact notation, summation I is equal to 0 to n ai plus bi x to the power I. किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. So now by utilizing the commutativity property of real numbers, can I write this one as summation I is equal to 0 to n bi plus ai into x to the power I? Can I write this one as? Yes, ma'am. Yes, If ma'am. I can write this one, this is what? Simply v2 plus v1. V1. So commutativity with respect to vector addition also hold. Yes, ma'am. Now let us come with the third one. Existence of vector, zero vector. Before that, please tell me whether what will be the zero polynomial? Degree 0. Degree 0. Ma'am, constant. Constant term was known as zero polynomial. Like if I write a1, can I call this as zero Straight line. polynomial? Straight नहीं, line passing रिप्रेजेंटेशन through उसका क्या horizon. है? Zero. जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जिसकी डिग्री 0. x की पावर 0. क्या वैल्यू रखें जिससे सारी पूरा इक्वेशन X to जीरो the हो power जाए? 0, ma'am. एक एक लोग फिर से बोलिए. A0 into x to the power x की 0. पावर 0 हो. राइट. ए नॉट क्या फिर से बोलिए जरा. Ma'am, with the constant power Ma'am, and coefficient x का terms will नहीं. also be 0, I think. Variable coefficient equal to 0. वेरिएबल का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0. Yes, ma'am. Ma'am, a x की पावर 0. ए Ma'am, एक्स by की equal to पावर 0. constant. Yes, ma'am. और किसी ने क्या बोला? y इज इक्वल टू 0. No, ma'am, by equal to constant. Ma'am, कोई Ma'am, number अगर coefficient Coefficient is equal to 0. coefficient. Ma'am, जीरो 0 पॉली, हाँ degree of zero बताइए. polynomial is not defined, ma'am.
Degree of Ma'am, zero their polynomial is not defined. coefficient of Correct. Ma'am, whose value is 0. 0 polynomial is 0. कोई और पीछे से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, प्लीज बोलिए। x के ऐसे क्या वैल्यू रखे जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए? मे बी वो तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं ना, यहाँ पे हम All जीरो coefficients are पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं, राइट। A zero polynomial is the polynomial in which each coefficient is All zero. coefficients are 0. जब सारे के सारे कोफिशिएंट हो जाते हैं उसे हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, मींस नथिंग बट जीरो, क्योंकि सब कुछ Ma'am, अगर हर कोफिशिएंट p जीरो of है, x is equals to 0. व्हाट इज इक्वल टू p P of of x x is is equal, equals to how yes, p ma'am. of x is equal to 0? अगर हम पहले तो हमें ये बताइए, अगर हम px is equal to 0 लिख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल है या इक्वेशन? Ma'am, it's denote because all coefficients are 0. मैम तो ये तो जीरो सा पॉलिनोमियल हो जाएगा। x का क्या वैल्यू पे px का पॉलिनोमियल वैल्यू है। 0 आ रहा। ओके, आप इस रिप्रेजेंटेशन को कह रहे हैं जो यहाँ पे हमने pnx लिखा था, इसके करेस्पॉन्डिंग कह रहे हैं कि p of x is equal to 0? No, ma'am. मैम वेरिएबल कोफिशिएंट It's इक्वल टू 0 0। polynomial. अब मैम x 0 वेरीज polynomial. करेगा और x में जो भी वैल्यू रखेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो 0 हो। नहीं, x वेरी करेगा Ma'am, तो please फिर वो continue yourself. जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है Very जिसका ईच complicated. कोफिशिएंट 0 हो, Yes, like ma'am. this one, 0 plus 0 into x plus 0 into x square plus 0 into x to the power n। हर एक कोफिशिएंट जब 0 होता है तब हम उसे जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखने पे वो px 0 हो रहा है, इन दैट केस दैट इज नोन एज जीरो of polynomial, not Zeros zero of polynomial. Zeros are Are roots we, of the polynomial. yeah, roots are also known as that. Roots is another name for that. Root of that polynomial or zero of that polynomial. Usually px is equal to 0 is representing an equation. Yes, ma'am. yes. So this 0 will belongs to this v or not? First question is that. No, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. It's belongs. यहाँ पे क्या दिया था? डिग्री लेस देन आर इक्वल टू n हो विद रियल कोफिशिएंट, तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। For convenience purpose we also assume that degree of zero polynomial is -1. But ma'am, if the coefficient of each term is 0, then how we can define the degree of that polynomial? I said for convenience purpose it is assumed. Means Oh, some sorry, ma'am. writers say that 0 has -infinity degree, some says that -1, क्योंकि प्लस में तो कुछ हो नहीं सकता ना, जीरो कांस्टेंट, अगर 0 डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट नंबर हो जाएंगे, उसके आगे जब हम जाएंगे तो वो सारे 1 2 3 4 इंटीजर्स में जाएंगे। तो for notational convenience in mathematics it is defined as zero polynomial is degree of zero polynomial is -1 or any negative number। मीन्स ये ऑथर टू ऑथर चीजें वेरी करती हैं। यूजुअली वी अज्यूम दैट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज -1। किसी को कोई दिक्कत अगर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ दिस जीरो पॉलिनोमियल -1 लेके चले तो?
No, No, ma'am. ma'am. If no, will this belongs to V? Yes, ma'am. If this belongs to V, what will be our V1 plus 0? V1 plus 0 will be A0 plus 0. Or again, I will write in some form. It will be easy to write. Summation I is equal to 0 to N AI plus 0 into X power I. This is equal to AI into 0 क्या होगा? बताइए. रियल नंबर में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा? That real number, ma'am. That real number. Real number. So this will be summation I is equal to 0 to n AIX to the power I, and this is nothing but our V1. So existence of 0 is guaranteed, holds. One more condition is satisfied. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let us see about fourth one, existence of minus vector, minus of vectors. If V1 belongs to V, V1 is defined how? A0 plus A1, let me write in some form. Sorry. V1 is equal to summation I is equal to 0 to N AI x to the power I belongs to V. I would like to define minus of V1, which will be summation of minus of AI into x to the power I is equal to 1 to N. My first question will be, will this belongs to V or not? Yes, ma'am. बिलोंग करेगा क्योंकि अगर AI रियल नंबर है तो माइनस ऑफ AI भी रियल नंबर है ना? Yes, ma'am. And with respect to this one, so for any given V1 in V, there exists minus of V1 which will be defined by this such that V1 plus minus of V1 will be what? Summation of I is equal to 1 to N AI plus minus of AI into x to the power I. AI plus minus of AI will be what? 0. Real number. This is 0. I is equal to 0 to N. 0 into x to the power N. Sorry, I. Now this is what? This is 0 polynomial which we have defined here. Right? Yes, ma'am. So existence of minus vector is also verified. Now the next property is what? Fifth one is what? AB into B. Yes, compatibility with respect to this one. For this, let स्केलर्स को किससे डिनोट करें? आप लोग कुछ बताइए. अल्फा बीटा कर दें क्योंकि AI BI इसमें आ रहा है, इसके स्केलर्स में आ जा रहा है. Small k. K1 K2 ठीक है. 2 नंबर्स चाहिए ना. For every K1 K2 in R and V1 in V, K1 into K2 into V1 is equal to what? K1 K2 summation I is equal to 0 to N AI x to the power I. And now our scalar multiplication is defined how? The scalar will go to each coefficient. So this will be what? K1 into summation I is equal to 0 to N K2 into AI x to the power I, right? Yes, ma'am.
Again, one more time we will apply the definition of scalar multiplication, and what it will become. I is equal to 0 to n k1 into k2 into ai into x to the power I. This is true. Now, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. can I utilize here associativity of multiplication of real number? क्योंकि k1 भी रियल नंबर है, k2 भी रियल नंबर है, ai भी रियल नंबर है. Can I write this one as I is equal to 0 to n k1 k2 into ai x to the power I? We can write this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If we can write this again by utilizing the definition of scalar multiplication, can I write this one as k1 k2 into summation I is equal to 0 to n ai x to the power I? Yes, ma'am. And this is what? K1 k2 into v1, right? So compatibility results also hold. K1 k2 v1 is equal to k1 k2 v1. Yes, ma'am. Yes, Now let us see next one. Next one says what? This 1 into v. चौथी प्रॉपर्टी या पांचवी? छठी. छठी है मैम. 16. 1 is a polynomial. Can I consider 1 as a polynomial of degree less than or equal to n? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So 1 belongs to b and sorry 1f में होता है ना? हाँ 1f में होता है. 1 is a real number, and if I take v1 in v, what will be 1 into v1? This will be what? By definition 1 into summation I is equal to 1 to n ai x to the power I. This is equal to summation I is equal to 0 to n 1 into ai into x to the power I. 1 into ai क्या होता है रियल नंबर में? क्योंकि 1 एडिटिव आइडेंटिटी ai मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, ai में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. I is equal to 0 to n ai x to the power I, and this is what? v1. So for any v1 in v and 1 belonging to r, we have 1 into v1 is equal to v1. This property also hold? Yes, ma'am. Next one is what? Distributivity of scalar multiplication with respect to vector addition. Seventh one, let us see. If I am taking scalar, हम लोगों ने क्या लिया था? k1. For k1 in r and v1 v2 in v, what will be k1 into v1 plus v2? This will be equal to k1 into summation I is equal to 0 to n ai plus bi x to the power I. Am I right? Yes, ma'am. If I can write this, can I write this one as summation I is equal to 0 to n k1 ai plus bi into x to the power I? Correct? Now, real number, we know that multiplication, usual multiplication is distributive over addition by the property of field. क्योंकि r तो हमारा field था ना? Yes, ma'am. r में डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती थी. हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? समेशन I is equal to 0 to n k1 ai plus
K1 bi whole multiply by xi. We can write this. Yes, ma'am. And this is what K1 v1 plus K1 v2, right? By definition of addition, vector addition. Yes, ma'am. So one part of distributivity hold. For second part, if I take K1 plus K2, okay, first let K1 K2 in R. Which are we? आप लोगों को 1 2 में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? K1 K2 in R and V1 in V, then K1 plus K2 into V1 will be what? This will be equal to K1 plus K2 into summation I is equal to 0 to n ai x to the power I. Multiplication how defined? Scalar multiplication. I is equal to 0 to n K1 plus K2 into ai x to the power I. Correct? Yes, ma'am. Again, by utilizing the properties of real number, how we can write this one as K1 is equal to 0 to n K1 a1 plus K2, sorry, I. K2 ai into x to the power I. And this is what K1 v1 plus K2 v1, right? करेक्ट है ना ये? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. So what we are seeing, all the 8 properties for vector space is satisfying. So from this, what we can conclude, the set of all polynomials of degree less than or equal to n, where the coefficients of the polynomial are coming from real number, over the field of R, where addition and scalar multiplication are defined by this way, are vector space. Am I right? Conclude कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So today we will stop here. I will request you. अब आप लोगों की next class कब है? Thank you, ma'am. 3 दिन बाद. 3 दिन बाद है ना? Ma'am, Thursday. Ma'am, it is 20. Okay. So please try all these three, whether these are vector spaces or not. With proper arguments. Yes. मैम इसको अपलोड कर Okay, दीजिएगा ma'am. Thank पीडीएफ you, को. ma'am. हाँ, Recording इसे हम upload. chat box में. पीडीएफ थोड़ा अपलोड Ma'am. कर दीजिएगा ना प्लीज। मैम पीडीएफ Okay, को okay, अपलोड कर no दीजिए सर. problem. मैम एक बार फाइनल मैम दोबारा वीडियो कंक्लूजन लेक्चर एक का बार लेट बता दो लास्ट कोई में। दिक्कत नहीं है, पीडीएफ